हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मई 26 में अपना पेपर दिया था. Many students were waiting for this video for the review of paper number 2 business laws. पेपर मैंने ठीक से देखा कल जब एक बच्चे का कमेंट आया कि मैम मई 26 बिजनेस लॉज एंड इको के पेपर का रिव्यू चाहिए. And honestly, I had seen it after the exam also, this paper, but बहुत ही ऊपर ऊपर से देखा था and it did not make sense कि why everyone is telling that the paper is hard. But I agree, the paper was on a difficult level and especially for those students जिन्होंने पढ़ाई थोड़ा सा लॉ को इधर उधर कर दिया था. If they had not given their 110%, then for those students this paper was really difficult. 60% theory, 50% theory questions and 50% case study questions, but the case study questions were really tricky. And even the theory questions, bearing few questions, other questions had very specific points to be answered, and those students who did not take business laws preparation seriously, for them it was really a tough paper. And even for the students who had given their 110%, जिन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, for them also I feel this paper was somewhere between moderate and not at all easy paper, because they had asked multiple concepts in many questions and the case studies were lengthy, जिसका हौसला बहुत ही strong रहा होगा that I have to approach this paper with my calm mind. He can pass this paper, and yes, passing was not difficult for those students who kept this attitude. Let us review this paper and see what you expect on your own. After this review, you can comment down your marks that you are expecting, and if you got a fair idea of what you are going to score, then better start your preparation if you are on the negative side, and you can chill if you feel that you are going to pass in this paper and your aggregate for all the subjects is also going to be about 200, right? Coming to the paper, question number 1, bhai sahab, I would say question number 1 के पास जाते ही नहीं है, because what do I say of this question? Question 1A, 1B, I have a question by question analysis also here. If you can see, I have all my comments here on which topic the question was asked and what was expected. And honestly, few questions even I am waiting for the suggested answers, like how the institute frames the answer, I also want to see. But first of all, we will go through the question from last, because question number 1 and question number 2, I swear if I was in the exam hall, I would have got confused like how to approach this paper, because question number 1, question number 2, it would have taken my 10 minutes at least from the 15 minutes of reading time to read those questions. And what everyone who has to pass this paper should be thinking, let us skip question number 1 and question number 2 and let us go to the next question and see if we can approach at least those questions. So I am reviewing this paper from question number 6. Question number 6A, examine the validity of the instruments. It was a very simple question, yet they gave some points at which you would get confused, like प्रॉमिसरी नोट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा, बेयरर चेक के बारे में एक पूछा, एंड सेल्फ ड्रॉन एंड सेल्फ एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछा. सो all the 3 concepts were tested for this 7 marks question: promissory note, bearer, check and bill of exchange, right? Not a very difficult question if you know the characteristics, whether a check can be bearer, whether a promissory note can be bearer, whether bill of exchange can be self-drawn, self-accepted. That was the question. Question 6B, referring to the applicable provisions of the Indian Contract Act. This was a twisted question, and honestly, you will see my comment here. Question 6A. If I look at question 6A, what I have mentioned, validity of a negotiable instrument, I have mentioned it as difficult. Why? Because जब बच्चा question 1A, question 1B पढ़ के ऑलरेडी उसका आधा तो दिमाग वहां पे घिस चुका है, फिर वो आता है अगर लास्ट से भी, तो भी 6A इतना इजी नहीं लग रहा है पढ़ के, ठीक है. एटलीस्ट यू कैन राइट अबाउट बियरर, characteristic of a promissory note, characteristic of a bill of exchange, whether they can be bearer, RBI Act provisions, those you can write, but the conclusion, many students might go wrong in it. Question 6B, referring to the above provision, rights of finder of lost goods. This was an expected question. This was an easy question. If you have studied the theory questions well, this was an easy question. Rights of pawn or pledge, and also the option given was
Party defrauded has several remedies at his disposal and discuss the remedies. Another was circumstances under which a contract of bailment shall terminate. So this was an easy question, I feel. Question 6 was manageable. Question 6C says, Sale of Goods Act. State the situations when a seller can restrain the passing of property. A very specific question. The situations in which the passing of property can be restrained in spite of the goods being delivered. Very specific question. Also state the circumstances in which seller is presumed to have reserved the right of disposal. There is a theory question, directly theory of 2 points given in the module, and on that this 4 marks question was asked, right? ये भी बताना है और दोनों मिला के 4 marks के लिए है. So at least you could, if you, this was not directly given in the module, you would have to search it, but this one, it is directly given in the module and you can score here. Discuss the provisions with regard to determination of price by third party. In the mock test which we had conducted for our students, multiple times I have seen that I had taken this question. I felt that the determination of price by third party was an important question, but sadly only for 3 marks it was asked. So 6A, B, C, you could at least attempt somewhat. If you compare it with 1 and 2, you could attempt at least 6th question. And coming to question number 5A, case study, itna bada case study. And I always said students that approach the question in this way, that you read the question from the last. First read this paragraph and then quickly, according to what is asked here, then you go to this question. I have always told my students, and this paper exactly needed that strategy. So if you read this first, then you can know which points to ignore from this case study and which are not relevant for the particular question asked, because they have framed the case studies in such a way that you will remember various provisions. इसके ऊपर पूछा है question, या उसके ऊपर पूछा है, या इसके ऊपर पूछा है. You will get confused what provisions to write if you are not clear what is asked in the question. Now what is asked here? Analyzing the relevant provisions of the Sale of Goods Act, advise Rishi on the following based on the facts given in the question. Can Rishi return the tractor of the leading brand? ब्रांड जैसे ही बोलते हो ना, आपको याद आना चाहिए implied warranty, और इसमें ये चीजें दी हुई है implied condition में. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट, और जब ब्रांड नेम पे जाते होते हैं तो वो दोनों प्रोविजन आप लिख सकते हो, राइट, टू बी ऑन द सेफर साइड. ब्रांड नेम वाला भी प्रोविजन जब ब्रांडिंग के ऊपर आप जाते हो, और जब आप सेलर के एक्सपर्टीज के ऊपर जाके परचेस करते हो. कैन ऋषि रिटर्न ऑल 6 सीड प्लांटिंग मशीन्स, राइट? सो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग question based on tractor and the question is also based on the planting machines. So दो चीजें शायद सेल हुई थी, and then you read the case study, right? So that was the topic. I'm just briefing here and then we will go to my analysis question by question. I had already done the analysis so that it is a very precise video for you all. Question 6B, very easy question. This also I had asked in the mock test that we had conducted. And I had specifically mentioned to the students, how are you writing that a minor can be a partner in a partnership firm, but these are the limitations. That is not the way you have to write, but luckily they have given it here only, that a minor cannot be a partner in a firm because partnership is founded on a contract. And then they have asked, referring to the provisions of the Indian Partnership Act, discuss the rights and liabilities of a minor partner. I had asked this in the mock test paper, and if the students had taken this seriously, then they could have answered it very easily. This was a very easy question. 7 में से आप 6 तो ला ही सकते थे इसमें. Discuss briefly the exceptions to the rule doctrine of privity of contract. If someone had ignored the theory, right, and they had just looked at this topic from case study point of view, कि privity of contract के ऊपर कोई तो एक case पकड़ के case study आएगा, then it is a blunder. I am always telling students that theory में score करना अब ज़्यादा easy हो रहा है, क्योंकि case studies में institute आपको घुमा रहा है बहुत ज़्यादा, right? So I am telling you, September 26 वाले भी सतर्क रहना, theory अच्छे से करना. Make memory techniques, do whatever you can. I am also helping you out. We have many topics on which I am preparing the YouTube shorts video, and within 1 minute, 2 minutes, we are covering whatever is a specific important topic, right? And उसमें से 2 topic, the ones which I had posted in the last few days of the exam, 2 topics, partnership related जो question 1 में compulsory question करके आया, and some another topic I have mentioned at that particular point of question. Those were asked directly in the exam based on case study or based on theory. And if you have watched that shorts, you could have at least understood that I have confidence I can write something in this question, right?
सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट्स जितने आपको याद आ सकते थे, 5-6 केसेस जो भी आपको याद आए वो आप यहाँ पे लिख सकते थे. So question 5A, not a very difficult question, manageable question it was, because this was easy, and this, if you could manage the case study, handle it well, then it was easy for you. Question number 4A, again coming directly to the end, whether the bank's contention as to equal contribution by the person who have provided the guarantee, equal contribution लिखा है, guarantee लिखा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए था rights of surety against other co-sureties, equal contribution होगा, and if the amounts are specifically mentioned, then how the amount is going to be divided in case of default by the principal debtor. So these numerics I have emphasized that these topics should not be ignored. What would be your answer regarding liability of each guarantor towards contribution in case the bank makes changes in terms and condition, variation in terms and conditions, then discharge of the surety in case the creditor makes variation without the consent of the surety? This was a manageable question. Referring to the provisions, this is a direct theory question. Delivery ka importance, delivery endorsement, sub questions, multiple things asked, but this was also covered in our mock test paper. See, I am not claiming here that the mock test papers which we conducted at our class, those were replicating this paper, but I would say if some topic is asked in your test papers, whatever test paper, whichever class you are giving, and if you have made a mistake, what is the point? You have not improved your mistake and you just gave the paper. That topic might or might not come in the exam, but the point is you never know. So whatever mistakes you have made in these test papers, you have invested your timing studying for this test paper, then giving the test paper, your teacher has corrected the test paper and gave you some comments, work on this, and even those questions where you went wrong or the whole test paper questions can help you out at least to get to your passing scores, right? Discuss the following terms in which you would find in the Indian regulatory framework. Very easy direct theory question, 6 marks, you could manage it, right? Then so after I am discussing, you might feel कि यार ऐसा अगर कर लिया होता तो शायद passing हो जाता था. So never ignore and underestimate the importance of such topics. You feel like इसमें क्या ही है, and I always tell you might know the theory, like for example importance of delivery, you know in your mind, but what to write, that specifically has to be prepared, and for that you give the mock test paper, and if you were not able to write, you should have gone home, sit for a while, understand the provisions, recall them, try to write, and that is how your answer could have been prepared and you could have replicated it, importance of delivery, in this final exam, right? Question number 3A, coming to the end. Analyzing the relevant provisions of the Indian Partnership Act, decide whether the firm was correct in refusing the inspection of accounts by Mr. Nirman during its firm's continuance. अब देखना पड़ेगा Mr. Nirman है कौन, ठीक है. Also decide whether Nirman is legally eligible to ask the accounts of the firm for past 3 years on dissolution. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इस पे कभी भी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में फोकस नहीं किया है. There is just a single line that from which date you can ask for the accounts. There are 2 parts. See, if you see here, as I have read the question, Nirman is someone to whom the interest in the partnership firm was assigned. So this question was on transfer of partner's interest. उसके rights क्या होंगे during the continuance of partnership and at the time of dissolution. Now there they have written, you could have got confused कि assign किया है, transfer नहीं किया है, but any assignment of interest, same answer आने वाला है आपका, because there it is written transferee who has got interest in the partnership firm by way of sale, mortgage, or anyhow, if the interest in the partnership firm is assigned to him, so that is about rights of the transferee who has received interest in the partnership firm. So at least you could write some provisions. Conclusion might go here and there, but you could have write the provisions. 4 में से आपको शायद 2 तो वहाँ पे मिल सकते थे. Mr. Pramod, the senior partner, ये वाला question. Decide whether at this juncture Mr. Pramod as an active partner is authorized to withdraw the suit and acquire the property. Easy question, specific question. Implied authority में क्या क्या included नहीं होता है ये आपको पता होना चाहिए था. There is a list of transactions और ये जो transactions यहाँ पे discuss किए हैं, those fall within the exceptions of implied authority. That is, a single partner cannot bind the firm if he does these transactions.
7th वाला क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, टाइम परमिट करता है तो ही आपने ये अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पूछ लिया कि प्राइवेट कंपनी अगर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है क्या, हो सकती है, देयर इज नो इशू इन इट। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब नोटिफाई करने के बाद ही उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जा सकता है, एंड हु नोटिफाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज, एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस नोटिफिकेशन, 51% का एटलीस्ट स्टेक होना चाहिए गवर्नमेंट्स का, तो वो वाले कंडीशंस आपको पता होने चाहिए थे, वो वाला इंपॉर्टेंट था। एंड डोरमेंट कंपनी के बारे में भी लिखना है, तो बहुत लंबा था। डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन इटसेल्फ एक 4 मार्क का आना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने तो ये तीनों मिला के 7 मार्क का ही पूछा है सिर्फ, तो बहुत कुछ लिखना था इस क्वेश्चन में। देन कमिंग टू 3A अपना पूरा डिस्कस हो गया। अच्छा ये रह गया 3B, हाँ ये हो गया अपना। 3C रह गया, रेफरिंग टू द प्रोविजन स्टेट द सिचुएशन वेयर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेज इज अवॉर्डेड, मतलब एकदम स्पेसिफिक पूछा है, मॉड्यूल में दिया हुआ है कि ये 2 केसेस में ही आपको विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिल सकते हैं, राइट। तो अगर किसी ने वो पढ़ा था तो याद आएगा, अगर बहुत पहले पढ़ा था तो शायद फिर भी याद ना आएगा। 1 डे बिफोर एग्जाम वाज रिविजन इंपॉर्टेंट था इसके लिए। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का डिफरेंस, ये भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था, एक पूरा लिस्ट दिया है टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस आपके मॉड्यूल में, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2A, लंबा सा केस स्टडी 7 मार्क्स के लिए, ऑलमोस्ट 2 पेज का। क्या करना चाहता था इंस्टीट्यूट आपके साथ पता नहीं। वेदर रोमी कैन रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ 45,000 बाय मेंशनिंग दिस, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी, मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि मैं खुद वेट कर रही हूँ कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर इसमें क्या आता है। दे हैव आस्क्ड अबाउट द कंडीशंस, वारंटीज एंड व्हाट नॉट इन दिस, मतलब डिफिकल्ट था, 3 सब क्वेश्चन पूछ लिए। आई एम इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिफरेंशिएट एनी 3 पॉइंट्स बिटवीन इक्विटी शेयर्स, इजी था, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सच स्मॉल क्वेश्चंस आर नॉट टू बी इग्नोर्ड, टाइम एंड अगेन यू शुड रिमेंबर दिस। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो 4 में से आपको 3.5 यहाँ पे मिल सकते थे। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, इजी क्वेश्चन, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट रिविजन यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाया था, नेम ऑफ एलएलपी के सारे प्रोविजंस। और यहाँ पे और एक चीज पूछी थी उन्होंने, डिस्कस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुमो टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स रिड्रेसल ऑफ द अबव इशू, मतलब सारे सेक्शंस पूछ लिए। और सब क्वेश्चन और एक पूछा था, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज वेल एज, पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो इलेबरेट अपॉन द प्रोविजन रिलेटिंग टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में भी पूछा है, एंड डिफाइनिंग अ रेसिडेंट पार्टनर, रेसिडेंट मतलब क्या वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना था, ठीक है। तो जिसने वो मिस कर दिया अगेन 1 मार्क आपका चला गया। 182 डेज वाला प्रोविजन अगर आपने नहीं लिखा होगा तो। सो 2A B C, A तो छोड़ ही दो, B and C was manageable, you could have attempted very well question 2B and 2C, 7 मार्क्स तो मैं छोड़ रही हूँ वहाँ पे। 1A लंबा सा चल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, वेदर देयर इज अ लीगली वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीफली डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू राकेश इन दिस सिचुएशन, व्हाट इफ विकास द ब्रोकर नेवर एक्चुअली टोल्ड रविदो अनइंटेंशनली। वो 2A को जैसे हमने इग्नोर किया, आई एम इग्नोरिंग दिस 1A, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, घुमा फिरा के पूछा है, पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या कंक्लूजन इसमें देने वाला है, राइट, क्योंकि प्रोविजंस पता है हमें क्या लिखने है। दिस वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेंसी, राइट, सो एजेंट के पास कितना अथॉरिटी है और वो सब चीज के रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आप क्या क्या लिखोगे इसमें, क्या क्या सोचोगे, 3 सब क्वेश्चन पूछ लिए है उन्होंने। देन हितार्थ फाउंडेशन, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, स्मॉल पॉइंट्स अगर आपने नहीं इग्नोर किए हैं तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन था। 2-3 सब क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, सो इट इज अबाउट वेदर राम एंड सन्स दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म कैन इन्वेस्ट 25% इन द टोटल इक्विटी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देन डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय सेक्शन 8 कंपनी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। एंड व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू आफ्टर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सेक्शन 8 के ऊपर भर भर के पूछ लिया 7 मार्क के क्वेश्चन में। एबीसी एंड को पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड, ये वाले के ऊपर मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने पूछा था, मैम प्लीज मेक अ यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन दिस, एंड आई forgot to upload the shorts and I uploaded it on the morning of your exam. Wish I would have uploaded it a bit earlier, and many students, if they would have seen it, they could have scored in this. I have discussed these provisions on the demand of one of the students, and इसका मैंने quick revision लिया था, explanation नहीं था उसमें, but at least you could have recalled, और आपका confidence रहता था कि ये मैंने सुना है, YouTube shorts देखा होगा तो, and you could have scored in this. So
these questions, these topics all I had discussed. Now coming to this, you can take screenshot if you want, so that you could compare कि आपने शायद ये लिखा था नहीं लिखा था, and you can know your marks. I don't recommend doing the calculation of marks after coming from exam, because if you lose the hope and it affects your next paper, it is a very difficult situation for you. You should never do that, because इस सिचुएशन में इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ग्रेस मार्क्स शायद मिलेंगे ही मिलेंगे ये वाले पेपर में, इतना डिफिकल्ट आया है तो. बट अगर आपको पेपर डिफिकल्ट गया है करके इफ यू लूज द होप एंड इट अफेक्ट्स योर नेक्स्ट पेपर, it is of no use. It will cost you an attempt, and this is what maximum students do, and this is how institute plays with your mind, right? And only the ones who are of stable mind and who know how to be calm, they are going to like win in these exams. Question 1A, it was a lengthy twisted question. Now what you can do is you can have your question paper side by side and then compare what I have written. Yes, it was a lengthy difficult case study. Question 1B, multiple concepts were asked but they were manageable. Section 8 अगर आपने ठीक से किया होगा Companies Act का तो manageable था. It was moderate. Why I am saying moderate? Because the question was too long, right? Otherwise it was a easy question. Question 1C, as I discussed, मैंने ये इसके ऊपर revision shorts cover किया था. It was a easy question, but only if you had not ignored those provisions. Otherwise the whole paper was difficult for you if you have ignored simple provisions. Question 2A lengthy था, twisted था. Case study जैसे 1A 1B वाला lengthy था, ये भी difficult में हमने categorize किया है. Question 2B was a direct theory, easy question. Question 2C, as I discussed, I had covered it. नेम रिलेटेड LLP का और डेजिग्नेटेड पार्टनर और रेसिडेंट पार्टनर का डेफिनेशन इजी था. 3A, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट. इफ यू हैव आइडेंटिफाइड व्हाट यू हैव टू राइट, द प्रोविजन वाज दिस व्हिच यू हैड टू मेंशन, इट वाज इजी फॉर यू, नॉट मॉडरेट ऑल्सो. इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, 2 ट्रांजेक्शंस जो उसमें कवर्ड है आउटसाइड इम्प्लाइड अथॉरिटी, अगर आपको वो याद आते हैं तो ये आपके लिए इजी था. क्वेश्चन 3B मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, लेंदी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें मॉडरेट लिखा है. क्वेश्चन 3C डैमेजेस के बारे में डिफिकल्ट था, अगर आपने थियोरी को बहुत सीरियसली नहीं लिया था तो आपके लिए डिफिकल्ट था. 4A राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देयर इज वेरिएंस इन टर्म्स, वो वाला क्वेश्चन मैंने इसको मॉडरेट मार्क किया है, बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस 4A तक आते आते तो आपकी जान ही निकल जाती है, राइट? तो 4A 4, 5, 6 बहुत, हर क्वेश्चन को आपने अगर सेपरेटली ट्रीट किया, पहले क्वेश्चन का जो बैगेज है वो लाया नहीं वहां पे, देन यू कुड हैव डन इट. मतलब आई सैल्यूट दो स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस पेपर विद अ काम माइंड एंड दोज हु विल गेट लाइक पास इन दिस पेपर. 4B नेगोशिएशन डिलीवरी कांट बी, डिलीवरी के बारे में कब नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, मॉडरेट था, इतना ईजी नहीं था. अगर आपने थियोरी को इग्नोर किया होगा तो आपके लिए तो डिफिकल्ट था. ये इजी क्वेश्चन था. 5A एक्सेप्शन टू कैविएट एम्प्टर कंडीशन क्वालिटी फिटनेस, आप एटलीस्ट इसमें थियोरी लिख सकते थे. राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर, इजी क्वेश्चन था. एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको 2-3 भी याद आते हैं तो आप समझ लो कि आपको एटलीस्ट उतने मार्क्स मिल रहे हैं, आपके लिए इजी था. वैलिडिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा ट्विस्टेड था, डिफिकल्ट कैटेगराइज किया मैंने. एंड 6B में जो ऑप्शंस थे एटलीस्ट आपको उतना तो थियोरी आना चाहिए जो दोनों ऑप्शंस में पूछा है. I have categorized it as easy. And 6C बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछे थे इंस्टीट्यूट ने, अगर आपको वो याद नहीं आते, अगर आपका स्टडी बहुत ही डिटेल्ड नहीं था, जो कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा, तो 6C उनके लिए डिफिकल्ट होगा. ओवरऑल आई वुड से आफ्टर लुकिंग एट ऑल द कैटेगरीज एंड द कमेंट्स दैट आई हैव मेड, this paper was somewhere between moderate to difficult, not at all an easy paper, and all the very best. If you have any doubts, you can message me on my email ID, and if you feel that you have attempted your given your best, then hope for the best and don't panic. I hope your result goes well and institute gives you some grace marks and you get across this exam. All the very best.